Hello students, in last video I taught you merits and demerits of cooperative organizations and today topic is types of cooperative organizations. Students, there are six types of cooperative organization. First is Consumers Cooperative Society. It formed to protect the interest of consumers. Students, this type of society is formed to protect the interest of कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सोसाइटी फॉर्म की जाती हैं. दिस सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल दैम टू द members at reasonable price. Students, these societies purchase goods directly from manufacturer and sell that goods to their members at reasonable price. So, no middleman is present between manufacturer and society. The profit is distributed among all the members. जो प्रॉफिट है सोसाइटी का वो सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. The main objectives of forming this society are: first point is to ensure regular supply of essential goods, necessary goods to its members. Students, first aim is कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स, इसेंशियल गुड्स का रेगुलर सप्लाई करना अपने मेंबर्स को. सेकंड एम इज़ टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय रिमूविंग द मिडलमैन. गुड्स को रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल कराना अपने मेंबर्स को बिकॉज इट रिमूव द आपका मिडलमैन. एंड थर्ड पॉइंट इज़ टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी, मीन्स बेस्ट क्वालिटी को प्रोवाइड कराना अपने मेंबर्स को. Second types of societies, producers cooperative society. This society is formed for small producers who find it difficult to purchase machineries and latest technology. Student, this type of society is formed for those producers who face the difficult to purchasing machineries and आपका न्यू या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स. दिस सोसाइटी परचेज रॉ मटेरियल्स, tools and other items in large quantity and provide these things to their members at reasonable price. Student, it is clear कि this society purchase raw materials, tools and other items which are required to the producers in large quantity and provide these things to their members at reasonable price. It's clear? Now, third is cooperative marketing society. This society is formed for small producers who face difficulty in selling their products at profit. Students, sometimes it may be happen कि that goods are produced by any आपका small producers but that goods is not sale in the आपका market due to the lack of marketing power. Some producers have no आपका marketing skills to sell their आपका goods in the market. So this type of society help to such type of producers who have the difficulty in selling their product in the आपका market at profit. तो this society performs various marketing functions such as transportation. Transportation means कि with the help of transport the goods movement from one place to another places. Second is warehousing. Warehousing is helpful to keep the goods and when the need of that goods या demand of that goods in the आपका market, then that goods will be supplied, will be moved, will be shipped from warehouse to the आपका market. Packing.
Packing is a play a very important role to increase the sales. Packing is also known as आपका silent salesman because a attractive packing attract the large number of customers to purchase that goods. So packing is play a very important role in selling of goods. Grading etc. Grading means के give the आपका marks according to आपका qualities on the product. If the product is best quality, then give the आपका first grade. Then if it is lower quality, then give the आपका second and third and fourth grade in this way. The production of different members is collected together and sold by society at good price, at higher price, at good price. Students, this society जो डिफरेंट मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के उन सब के गुड्स को प्रोड्यूस गुड्स को कलेक्ट करती है एक साथ एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एंड सोल्ड एट गुड्स बाय द सोसाइटी एट गुड प्राइस, एक अच्छे प्राइस पर इसको सेलिंग करती है. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. स्टूडेंट्स, समटाइम्स इट मे बी सीन कि सम मनी लेंडर्स do the exploitation of so many आपका producers. So solve that problem. For the purpose of solving that problem, this society is formed. This society is formed for of those people who find it difficult to arrange credits एंड लोन्स, टू अरेंज द फंड्स एंड लोन्स. बच्चों, ये सोसाइटी उन पीपल्स के लिए बनाई जाती है, उन पीपल्स के लिए बनाई गई है जिनको फंड्स को अरेंज करने में जनरल मार्केट से या मार्केट से डिफ़िकल्ट होती है, लोन लेने में डिफ़िकल्टी होती है. तो दिस सोसाइटी प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स. जो मनी लेंडर्स हैं वो पीपल्स का एक्सप्लोटेशन करते हैं, गिव द आपका फंड्स एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक द आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो दे प्रोवाइड, तो सच आपका सोसाइटी प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स एट इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट एवरी पीपल अरेंज थिंग्स of your needed required. Next is cooperative farming society. In such society, small farmers join together to get the benefits of large scale mechanized. Students, इन सोसाइटीज़ का बेनिफिट फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है वो इस लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड मतलब न्यू टेक्निक्स का बेनिफिट लेने के लिए ज्वाइन करते हैं. और ये सोसाइटी उन स्मॉल फार्मर्स के लिए बनाई जाती है जिनको एक लार्ज मैकेनाइज्ड फार्मिंग का बेनिफिट चाहिए. सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, fertilizers, machineries and other modern techniques for use in the cultivation of crops. It provides them opportunity of cultivation on large scale. Students, such type of societies provide the better quality of seeds, better आपका fertilizers, best machineries and other आपका modern techniques for the आपका farmers, and so that they cultivate the आपका crops and they improve their production in the आपका agriculture, and it provides them opportunity of cultivation on large scale, मतलब large quantity में अपना production produce कर सकें. Next is cooperative housing society. This is the last type of cooperative types. So these societies are formed to provide residential accommodation to their members. Student, these societies provide the आपका residential accommodation मतलब रहने के लिए घर और फ्लैट प्रोवाइड कराती है अपने मेंबर्स को. These societies purchase a big plot of land and construct flats on that land and sell these flats
to its members on installment to its installments and easy terms. इट्स क्लियर। स्टूडेंट्स, ये सोसाइटी एक बिग प्लॉट परचेज करती है और उस पर अपना फ्लैट को कंट्रस्ट करती है एंड देन प्रोवाइड आपका इट्स मेंबर्स ऑन इजी इंस्टॉलेशन इन आपका स्टॉल्स easy installment, it's clear, easy installment and easy terms and conditions, so that each and every members pay the amount of debt residential accommodation which are provided by such societies to them.